ओके, इस yesterday Pascal's law का क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाला है. सो वी नो ऑलरेडी एप्लीकेशन F1 by A1 इक्वल F2 by A2. एंड दूसरा दूसरा फॉर्मूला क्या है पास्कल्स लॉ का? A1 A1 H1 equal to A2 H2. हाँ ऐसा. ओके चलो जेई मेंस क्वेश्चंस कर रहे करो. Two arms are there, force 10 newtons is applied on the surface of the thinner arm. Thinner arm I am applying now. Okay. The force required to apply on the surface of the water on the thicker arm, कितना force लग रहा है? And force in thicker arm. This is a 2024 question. करो without help करो. Numerical based question. Area right? Area by r square. Where is it 100? 100 wrong. 2024 question है. You need to convert the centimeters into meters. Newton is SI units, right? सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा. Good evening, sir. एसएस का जल्दी करो. एसएस का पास्कल्स लॉ का कंटिन्यूएशन कर रहा है. So 1000. Yes, 1000 newtons is answer. Sir, I got 1 second. F1 by A1 is equal to F2 by I got 100 only. no. Sir, 10 into 14 by 1.4. 10 into 49 by No, 14 by 4.9. 1.4. Sir, anyways, if I oh wait, it's area by r square. Wait, 1 second. a diameter दिया ना? Oh yeah, 10 into 100, yeah, 1000. Yeah. On the video question. चलो. करो. करो. A hydraulic press can lift 100 kgs when the mass M is placed on a smaller piston. It can lift dash kgs when the diameter of the larger piston is increased 4 times and that of smaller piston is decreased by 4 times, keeping the same mass on the smaller piston. Okay. 2021 JEE Mains. दो केस में आप ले लो. अगर मैं स्मॉलर मास एम थिनर में लगाऊंगा, इट कैन लिफ्ट 100 kgs. That is first case. So can you give options? Numerical based नहीं. Then M is how much? How much kg is shifted? अगर इसमें फोर्स कितना लग रहा है अभी? mg लग रहा है ना, स्मॉल पिस्टन में mg. इट इज लिफ्टिंग हाउ मच? 100 मतलब 100 g mg राइट. सो 100 g is a f2 is f1. इसका एरिया a1, इसका एरिया a2.
So first equation बनाओ ऐसा, because mg is the formula, right? Now एरिया कितना गुना इंक्रीज होगा एरिया टर्म्स में बोलने का. डायमीटर अगर मैं इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, सो एरिया कितना होगा. अगर डिक्रीज बाय 4 टाइम्स, एरिया कितना गुना कम हो जाएगा. दैट वन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू एरिया एंड सॉल्व. Sir, कितना. sir, 256 with 2 zeros. 256 2 zeros. Yes, correct. Good. Sir, once can you show previous questions? I'll take screenshot. Yeah, that's it. Sir, that's it. Okay, question. Okay. Sir, I got only दो 2. जीरो ऐड कर लो, हो जाएगा. से हम कन्वर्टेड कुछ में चेक किया होगा, देखो. फोर टाइम्स अगर मैं डायमीटर इंक्रीज करूंगा एरिया विल बिकम 4 टाइम्स ज्यादा होगा ना. एंड डिक्रीज किया तो एरिया विल बिकम 16 टाइम्स, राइट. 16 टाइम्स A1 बढ़ जाएगा, 16 टाइम्स कम हो जाएगा. 5d square by 4, right? So d square No, मतलब sir. डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू d square. So 4 टाइम्स बढ़ गया तो एरिया विल इंक्रीज by 16 टाइम्स. Yeah, sir, I got 25,600. 35,000. 25. 35,000. Yes, correct. So what is the first equation you got, Pranav? First equation? Sir, 100 by 16 a square is equal to 100 g, 100 kg is mass, right? Yeah. That's why 0 miss होगा. G 100 g you take, right? So, but G and G will cancel, right? Okay, g cancel. So कितना होगा? Tell me. 100 by 100 by 16 a 16 a is equal to 16 m by see a. फर्स्ट केस में 16 नहीं है. फर्स्ट केस ये वाला है नॉर्मली, विदाउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डायमीटर वाला. फर्स्ट केस अप टू हियर ओनली, इधर तक ओनली. ओके, फर्स्ट केस का. सेकंड केस विल बी अगर इंक्रीज क्यों तो सेकंड इक्वेशन टेलिंग. सेकंड इक्वेशन में मास इज नॉट गिवन. कितना मास आपको लिफ्ट करेगा वो नहीं दिया. दैट इज m, कैपिटल M ओनली. एंड स्मॉल m तो दे दिया, वो स्मॉल mg आएगा. मतलब सेकंड इक्वेशन विल बी mg बाई बड़ा वाला क्या हो 4 टाइम्स बढ़ गया, मतलब एरिया इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, राइट. 4 टाइम्स ऑफ A2 if it can lift when the diameter of the larger piston larger piston का A2, right, is equal to. So again इसका smaller piston का क्या हो रहा है mg by it is decreased by 4 times, मतलब इससे कम कर दिया. So it is A1 by 16, right? Decrease by 4 times. Now solve करो two equations. You'll get a capital M value. So, want to be That is 16 a2. 16 a2. A2. Why? Sorry, cut. Yeah, 16. Now if you solve these two equations, इसका equation solve किया तो we'll get answer
capital M as 25600 kg. है? चलो, so equation आपको check करना पड़ेगा. This is first equation, this is second equation. चलो, now we'll talk about upthrust or buoyancy. ये मालूम है ना upthrust और buoyancy? Buoyancy means मालूम है ना? Weight of immersed liquid. Change in weight of immersed liquid. You know, buoyancy means कृष्णा मालूम है ना? 9th क्लास पढ़ा होगा ना buoyancy. बॉटल को अगर मैं डिप करूंगा, if I leave, what will happen? It will come up. It'll come up. The upward force is called buoyant force, the upthrust force. Okay, that is one thing. कुछ नहीं. आप किधर भी even water उसका वजह से क्या होगा? मतलब स्टोन बाहर में बहुत वेट है. अगर पानी में डालने से क्या होगा? It is becoming light. We can move the stone from one place to other place easily compared to ऊपर का. Why? Because some upward force is helping thrust to move. Okay, so upthrust देखेंगे. Upthrust का nothing but you know, the minimum, the what you say, the upward force acting on a body, immersed in a body, is called upthrust or buoyant force. Upward force को we call as buoyant force simply. Okay, and the phenomenon is called buoyancy. That phenomenon को we call as buoyancy. कोई भी bottle dip करो वो ऊपर उड़ेगा. And even weight also, if you see carefully, ऊपर air में weight measure करो, same weight पानी में measure करो, your weight कम हो जाएगा. Because upward force is making the weight to become less. That's called upward force. Suppose मान लो you have an object which is submerged, okay, inside the liquid. एक object है, कोई भी stone होने दो, it is submerged inside the liquid. Okay. Now इसका buoyancy का formula क्या होगा? We have to know. Okay. मान लो total volume of the solid को V बोलते हैं. Okay. And volume of the solid which is immersed in the fluid, nothing but VF बोलूंगा. Volume of the solid which is immersed in a fluid, कितना volume है, that only we have called VF. And volume of the solid को we call as VS मान लो. Solid का VS मान लो. Okay. Then upthrust का formula is given by, formula लिखो, VF into rho F into G. VF into rho F. Rho is what? Density of the fluid into G. So terminology लिखो इधर. VF क्या है? Volume of the solid which is immersed in liquid. लिखो. Volume of the solid which is immersed in liquid. Volume of the solid which is immersed in liquid, or we can tell volume of the fluid displaced. Volume of the fluid. देखो इतना volume is solid got immersed in the space of the liquid, right? Bro, volume of liquid. Volume first one, So volume of solid immersion liquid or volume of liquid volume of fluid displaced. Volume of fluid is displaced equals to that, the formula. No, this is buoyancy, buoyant force. So what is these two give? Wait, buoyant force. And ये BF को R I called volume of solid immersed in liquid. In liquid, or volume of fluid displaced. Volume of fluid displaced. And rho F is nothing but density of the fluid, and G you already know, acceleration due to gravity. So आपको कोएफिशिएंसी एक बुक में एक सिंबल्स रहेगा, बट एक ही फॉलो करो. यूज द क्वेश्चंस बार बार उसी टर्म्स में, and उसी टर्म्स में formula should also prepared, so it is easy for you. Okay, so VF into rho F into G is the formula, and VF की जगह में बहुत केयरफुल रहने का. अगर वो वॉल्यूम कितना वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम पीपल क्या करेगा, पूरा सॉलिड का वॉल्यूम ले लेगा, वो रॉन्ग हो जाएगा. आपको कितना वॉल्यूम पानी में है और लेनी लिक्विड में है, दैट वॉल्यूम ओनली शुड टेक. ओके, और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस मींस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. फ्लूइड डिस्प्लेस समझ में है ना, उस जगह में स्टोन came into picture, right? That much water get displaced, right? That volume only, both are same. Volume of the fluid displaced or volume of the stone immersed, that is same. Okay.
Now, if you know this buoyant force, we have to know Archimedes principle. ये मालूम है ना Archimedes principle क्या है? Tell me. स्कूल में वो ना अभी कृष्ण इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. हाँ Did I forgot? ऐसे टेलिंग पार्टीज ज्यादा हो गए तो प्रगट ही होगा. ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यू आर स्टडीइंग फ्रॉम 9th क्लास के. ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का मालूम है ना वो क्या किया बोल के? वी नो राइट अडी. ओल्डन टाइम्स में किंग का कहानी मालूम है ना? किंग का क्या किया बोल के? किंग का क्राउन बनाया एक पर्सन ने. क्राउन का वो रहेगा ना, वो बनाया तो उसको डाउट आया कि किंग को डाउट आया कि अरे ये प्योर गोल्ड है नॉट प्योर गोल्ड है, डाउट आया. Yeah. सो मालूम है ना सबको, स्टोरी मालूम है ना? I think so. Yes. So that person is called Archimedes. Who has he has given the एक buoyant force का indirectly has given the buoyant force का formula in the Archimedes principle. So क्या किया देखो, it says that when a body immersed partially or completely in a liquid, partially dip करो और complete dip करो, it experience an upthrust. Compulsory upthrust आएगा ना, which is equal to weight of the fluid displaced by it. Weight of the fluid displaced by it. This is called Archimedes principle. So upthrust. See, indirectly has given the formula for upthrust in another way. Okay, upthrust का formula क्या? What we learned? Vf into rho f into g. This is upthrust. Okay, and what is Vf? Volume into density is called as mass, right? Mass of fluid displaced into g. And what is mg? Nothing but weight. So upthrust is equal to weight of fluid displaced. Fluid displaced. This is only Archimedes principle. Weight of the fluid displaced is nothing but Archimedes principle. So that आप सभी कोई भी object is there. Object को what you do is, suppose I want to measure the weight. अब weight क्या कैसे measure करेगा उस object का weight normally? इनडायरेक्ट वे में ओल्ड डेज में क्या करता था, दे टुक ए रियली, मतलब इफ यू ट्राई एट होम आल्सो यू कैन ट्राई. पूरा एक ग्लास में फुल अप टू द कंप्लीट फिल करो. ओके, नीचे एक स्मॉल प्लेट रखो, यू पुट अ ग्लास एंड फिल द कंप्लीट वाटर. एंड सपोज यू वांट टू मेजर द वेट ऑफ द कॉइन, सपोज कॉइन का यू हैव इंस्ट्रूमेंट टू मेजर डायरेक्टली, बट इनडायरेक्ट वे में देखो, आप वो कॉइन को वो बॉटल वो ग्लास में डालो, पूरा पानी भर के, है ना, वो कॉइन डालने से क्या होगा, पानी विल कम डाउन इन द प्लेट. ओके, एंड दैट प्लेट में जो पानी है वो आप वेइंग मशीन में मेजर करो, वो कितना वेट है, वो कॉइन का वेट सेपरेटली मेजर करो, दोनों का वेट सेम हो जाएगा. दैट्स व्हाई दैट अपथ्रस्ट इज नथिंग, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज नथिंग बट देन अपवर्ड थ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स बोलते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली इनडायरेक्टली. ओके, आप जो भी वेट पानी का डिस्प्लेस हुआ, दैट वेट इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट का वेट ओनली इनडायरेक्टली, दैट इज नथिंग बट अपथ्रस्ट. ओके, चलो, सो फॉर्मूला आ गया ना, vf into rho f into g. vf you should be very carefully. vf पूरा डिप किया तो नथिंग बट सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विल बी सेम. इफ आधा डिप किया तो वो जो बॉटम वाला है उसका ही लेने का वॉल्यूम. ओके, चलो करो, जल्दी करो, हट जाएगा. स्टोन डेंसिटी इज लाइंग सबमर्ज्ड इन वाटर, पूरा डिप कर दिया इनसे, सबमर्ज्ड हो गया. वाटर का डेंसिटी इज गिवन, मास ऑफ द स्टोन इज गिवन, कैलकुलेट अपथ्रस्ट, सिंपली अपथ्रस्ट.
Upthrust का फॉर्मूला मालूम है? VF into rho F into G. Rho F is given, G is given, and volume of the fluid, volume So of the won't the solid volume of immersed. the fluid be same as volume of the stone? Because it is submerged, right? So ये पूरा 100. पानी में डिप गया. 200 into 10. So you get 1000 into 100 into 10 as the answer. You get 1000 square. What was that? 10 power 6. Wrong. आराम से करो. Here volume of the fluid We displaced. have to take density of water, right? Density of water is how much? So you get 100. Never mind, I made a mistake. Answer कितना है? 100. Yes. Yeah, sir, 100. So Newton's only. A force and upthrust force only, right? So Newton only. I 100. Krishna? Yes. ना करो. Iron cube of mass 5 kg of side, a cube है, side also given, is suspended by thread in water में. पानी में suspend कर दिया. पानी में एक cube है, thread by thread से बना है. Now tension is acting on the rod. On this, is asking tension is how much? Is a cube of side 10 centimeters. Tension is how much? पानी में dip कर दिया. So what is density? Density of water कितना है? kg में 1000 only. 1000 only. Density of water always 1000 only. ग्राम में तो 1. Okay. So since it is completely submerged, already VF and solid ka volume is same. Okay. And what are the forces acting on it here? Whenever you dip inside the buoyancy. fluid में, buoyancy force act होगा, mg force भी act होगा, right? That means since it is equilibrium, you can write like this: T plus U is equal to mg. Use this formula and solve. No? Tension find करो. Upward force to downward force, right? So what is the density of iron? Density of iron. ना? Yeah. Density of iron क्यों? So to find So I got rho. tension as 40. देखें भाई डेंसिटी ऑफ आयरन क्यों है? इसका देखो टेंशन Just for फाइंड करना. volume you need, no? देखो VF into rho F into G, right? Okay, sir, got it. Side is given, right? वो side का वो. Sir, 40. Yes. Complete statics is Sunday I'm taking test. So then I got 40. Complete statics पक्का पढ़ लो. See, these chapters are so important. Write neatly in the notes properly. And formula sheet, no need of writing formula sheets. But take a printout and keep beside. Okay. Now the question is apparent weight of the body. Okay, apparent. What do you mean of apparent weight means? जो Weight in आपको water. weight in water indirectly. Okay. So apparent weight ka, when a body is wholly immersed in a fluid, its effective weight decreases. And that weight, apparent weight ka formula hai V apparent. How to get? Air में से upthrust निकाल दो, खत्म. Weight in air. Weight is also Newton, right? Weight in air minus upthrust. This is nothing but apparent weight. Weight in air minus upthrust. And इसका formula लिख लो apparent weight का. Apparent weight is equal to weight in air into इसका formula आएगा 1 minus rho f by rho s. Density of the fluid by density of the solid. एक formula learn करना पड़ेगा. And this एक दो formula learn करो. That's it.
weight in air into 1 minus rho f by rho s. Rho s is density of solid, this is density of fluid. Okay, when they're given densities, directly they will tell to find apparent weight. ये use करने. Okay, चलो. कहाँ बेटा? Yeah, 1 second. Turn on the video. So does wholly means fully? Wholly means fully. So like the apparent weight is basically like the fate weight, right? Weight in? Like fake. not indirectly actual. fake. Yeah. मतलब पानी में क्या होगा, वेट कम हो जाएगा ना, पानी में वेट है, दैट इज कॉल्ड अपरेंट वेट. Okay, 1 second. कोई भी ऑब्जेक्ट का एयर में सपोज 5 kg आया, पानी में इट इज 4.8 kg आएगा. सो अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट सेपरेट करने से आ जाएगा. Yeah, so W air, what is that? Oh, 1 minus रो एफ बाई रो एस. what एफ is इज rho फ्लूइड, S? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड. लिख लो Yeah, so डेंसिटी done, ऑफ done. फ्लूइड. यस, चलो करो. A stone of density is given, is lying submerged in water of density. If the mass of stone is given, calculate the force required to lift the stone. And the force is nothing but apparent weight only. Force required to lift the stone is how much? So density of the fluid is given, density of the solid is given, stone का apparent weight find करो. तो minimum force देना पड़ेगा उतना to lift the stone. So apparent weight is the minimum. Force, because आपको Force. पानी में minimum उतना force देगा, then only it will come out, right? That water में वो minimum force कितना है बोलते हैं apparent weight. Formula use करो. Weight in air into 1 minus rho f by rho s. Sir, you get Hmm. apparent weight as 100, so the total force will be 1000. Yes, 1000 newtons is answer. Okay, done. Chalo. Now, condition for floating and sinking. Or do you know? Float होने के लिए what is the condition in terms of densities बोलो? If density of solid is greater than density of fluid, क्या होगा? Tell me. It will float or sink. Density of solid is greater than density of fluid. Tell me. It It'll will sink. 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 अगर lesser than हो तो? Float. It will float. अगर दोनों equal हो तो? It'll partially float. Partial float means? Like दोनों a equal हो तो क्या होगा? a fraction of it will be floating. Fraction of its float. So it will float till mg is equal to the buoyant force. ऐसा तो मैं ऐसा दोनों सेम लिक्विड में दोनों डेंसिटी का में आई जस्ट आई पुट द ऑब्जेक्ट. सो क्या So होगा? like the level will be here and it will be inside the liquid level. यस करेक्ट. सो क्या होगा? द पानी इधर तक रहेगा एंड एग्जैक्टली सॉलिड ऐसा रहेगा. इसमें अंदर जाएगा बट ऐसा रहेगा, एग्जैक्ट बाउंड्री में रहेगा. एंड दिस टाइप ऑफ फ्लोटिंग इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्लोटेशन. लिमिटिंग फ्लोटेशन. ओके, सो ये दोनों इक्वल है तो ओके. नाउ विल सी द लॉ ऑफ फ्लोटेशन का देखने वाला है पूरा क्वेश्चंस. ओके, हो गया राइटिंग. चलो, Sir, लॉ ऑफ can you give me for a second?
So for the SS equal to SF, what point should I write it as? SS नहीं है, rho s is equal to rho Oh, f. sorry, rho S, sorry. Rho s is equal to rho s, that is called limiting flotation बोलते हैं इसको, where देखो ऐसा solid will be exactly boundary limit में below रहेगा, ऐसा इतना exact, 1 second. that is called limit flotation, limiting flotation. Yeah, so done. Yes, चला. Now the law of flotation. What is law of flotation means? Law of flotation means anything? Definition? सुना नहीं है law of flotation? Okay. Law of flotation nothing but equilibrium. Body is in equilibrium. Net force is 0. Okay. So उसका definition भी है, देखेंगे. A body floats in a liquid if the weight of the body is equal to weight of the fluid displaced. दोनों equal है तो it will float. This law is nothing but law of flotation, but generally meaning क्या है? Net force is 0. Net force acting on the body is 0. That means it is called equilibrium. Okay, this is law of flotation. When the weight of the body is equal to weight of the fluid displaced, the immersed by the immersed part of the body, that is called law of flotation. Okay, law of flotation में आपको समझ में आना है, उसका formula आएगा. That formula will be helpful in all the numericals. Okay, suppose मान लो एक solid है, एक object है, ऐसा solid, ऐसा immersed है. Okay, now इसका volume of the solid is, I told you, this is Vs and this is what? Vf. Volume of the solid immersed in the fluid. Okay. इसके ऊपर what are the force acting on it? One is mg, one is upthrust. Right? These are force acting on it. Now, since this object is in equilibrium, law of flotation we are talking about, equilibrium particle में net force is 0. That means आपको upward force equal to downward force, U is equal to mg or not? Okay. And मान लो the solid का density is rho s, density of the solid, and आपको mass मालूम है m. You tell me mass in terms of densities में, tell me upthrust का फॉर्मूला क्या है? Vf into rho f into g. And mass here, mass किसका? Stone का mass है. Stone का mass nothing but I can write like this: density into volume of the stone, volume of the solid. This is देखो, density into volume nothing but mass, right? Into g. So g cancel. आपको फाइनली एक फॉर्मूला आ रहा है. that फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा. कभी भी फ्लोटेशन में always use this formula: Vf into rho f is equal to Vs into rho s. Always use this formula. ये पूरा फर्स्ट फ्लूइड्स के बारे में, मतलब सॉलिड विच इज इमर्स्ड इन फ्लूइड वाला, ये पूरा क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड. ये कंप्लीट सॉलिड का, ये वाला जो सॉलिड का अंदर डिप किया ना, उसके बारे में. ओके, ये फॉर्मूला बैठ करने का आपको. Vf into rho f is equal to Vs into rho s is this is like one spherical object का कहानी. You have to use this formula. If the body is sphere, you have to use this one. Vf into rho f is equal to Vs into rho s. Yes, sir, done. Okay, same Sir, कहानी only for में a sphere. इसमें sphere It should be कोई equal. So what's the difference Huh? between this and Archimedes? what? What's the difference between this and the Archimedes? See, Archimedes में आपको लगेगा कि सेम है. Archimedes में upthrust is always equal to weight of the fluid displaced. That is upthrust. Upthrust का फॉर्मूला दिया है. But इसमें क्या बोल रहा है? Weight of the body is equal to the weight of the fluid displaced. This is law of fluid. मतलब indirectly net force is 0. When this both are equal, net force acting on the body is 0. Equilibrium है बोल के बोलेगा indirectly. Okay. Archimedes is given upward force का फॉर्मूला. That's it. Upthrust का. Okay. Now, Sir, this is only for a sphere. पियर होने दो, कोई भी होने दो, बट सी सिलेंडर में क्या होगा? सिलेंडर वगैरह में हाइट में देगा, सिलेंड्रिकल क्यूब में दे विल गिव इन टर्म्स ऑफ हाइट में. इसमें हाइट नहीं है ना,
सो इसमें जनरली इस टाइम में वी आर यूज दिस वन. अगर हाइट Okay, टर्म्स sir. में दिया तो, हाइट टर्म्स में दिया तो वी आर यूज, देखो, फॉर सिलिंड्रिकल और क्यूबिकल बॉडी, फॉर सिलिंड्रिकल और क्यूबिकल बॉडी में दे विल गिव इन टर्म्स ऑफ हाइट में the water, the cylinder is like this. Okay, इसका height is hf, total height is hs, and area is a, and this is nothing but vf, and this is nothing but vs, right? Volume of the solid, right? Now इसका cell में in this law of flotation में vf into rho f is equal to vs into rho s indirectly. Now see volume of the, इसका area ये ना, volume of the solid immersed in a fluid, इसका volume कितना होगा? Volume is nothing but area into height. Area into height is nothing but volume, right? So कितना है? Area into height is hf into rho f is equal to solid का volume कितना होगा? Area into height into rho s. So A cancel. Therefore use this formula, hf into rho f is equal to hs into rho s. This is the formula that you use for cylindrical or cubical body का. So vf rho f is equal to vs rho s is a basic formula we have to use for any spherical body. In height terms में दिया तो use this formula, hf into rho f is equal to hs into rho s. This is all formula statement में डाल दिया already. आया समझ में आया? So here आपको ये समझ में है ना, what is volume into density is called as, tell me. Volume into density is called as Mass. Mass. mass of the solid which is immersed in a liquid, right? And what is volume into density of the this one? Volume into density mass one, right? Mass of the solid. So दोनों indirectly mass we are equating indirectly. समझ में आ रहा है? So you learn this formula and this formula. Vf into rho f is equal to Vs into rho s in law of flotation में this formula बहुत helpful होगा. Now questions करेंगे. Suppose sometimes if they don't given the volume What of about the the washroom? sometimes if they don't given the volume of the solid, आपको कितना लेना पड़ेगा? 100 लेना पड़ेगा. एक 100 मान के उसका परसेंटेज के अकॉर्डिंगली यू गॉट टू सॉल्व. लाइक हम लोग नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस में वगैरह में लेते हैं ना, 100 बोल के मान दे, लेट द रुपीज इज 100 रुपीज, उसके परसेंटेज के हिसाब से देखना पड़ेगा, राइट? चलो क्वेश्चंस करेंगे. लास्ट टॉपिक है ये, हो गया तो खत्म. स्टैटिक्स डन, फ्लूइड स्टैटिक्स विल बी डन. व्हिच टॉपिक इज गोइंग टू आपका? So we just completed statics today. We'll start dynamics tomorrow. ओके. एंड एग्जाम के लिए कुछ स्टैटिक्स का कब है पता नहीं, बोलो ना. So we don't have an exam next week. नाइस. So we don't have any exam until November 10th. But in November 10th, we have from starting all. Oh, nice. See, that's why I'm telling you. आपको मैं नवंबर 10th तक आपको some chapters choose करो. We will divide the chapters into 2 categories में. We will write test on our weekends में. आपको क्या है? You first test में 3 chapters रखो. Second में 3 chapters रखो. Finally, before November 10th, you will write again complete chapters का. Then आपको see indirectly test your writing means you are writing here 25 questions and 25 questions, nearly 75 to 100 questions you will do both. That's why I'm preferring, why I'm putting the test and everything means आपको more questions you are learning indirectly exam. That's why see November 10th you have a complete exam system मानो. So आपको क्या है, we will divide the three chapters. You will decide the which 3 chapters you have to keep in Sundays में. You learn, be perfect, but do all the PVQs. See there is an advantage. अभी टाइम में द टेस्ट टाइम में लेस टाइम है तो कभी भी डू ऑल द पीवीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर में, यू विल गेट आइडिया. वो पीवीक्यूज बोलते नाम के पास से नहीं है ना, दोस आर जेईई मेंस क्वेश्चंस बोल, राइट? सो थिंकिंग पावर विल इंप्रूव एंड विदाउट सीइंग ट्राई टू डू ऑल द थिंग्स. सो वी विल टेक टेस्ट इन द, विल प्लान फॉर संडेस का टेस्ट है. ओके, सम 3 चैप्टर्स रखेंगे. ओके चलो क्वेश्चंस करो. एंड whenever volume is not given you should take as 100. ओके सॉल्व करो. Iceberg of density 900 kg per meter cube is floating in water of density this much. Okay, float हो रहा है. Ice cube is floating in water. Okay,
floating density is given. दोनों का density is given. The percentage of volume of ice cube outside the water is how much? How much percentage is there outside the ice cube? मतलब outside the water, how much percentage is there? I'll give options. Try. 10. Why? So because inside the water will be 90. Why 90? 900 by 1000 into 100. Okay. Correct. Let them do. So since it's floating, flotation में Vf into rho f is equal to Vs into rho s. So first measure से करो, आप properly करो. Vf into rho f is equal to Vs into rho s. Use करो. So since total volume is not given, you should take total as 100. Let the volume of solid is 100. No ले लो, मना करो. Vf into rho f, because we want volume percentage of ice outside the water कितना है? तो बस Vf find करो. First Vf find करो. Density of fluid also you know already 1000 will give. So Yeah, Vf, so you get VF by VS as 0.9, 90%. They but are yes, outside, outside, right? will be 1 minus 0.9. So solid का density is 900. So Vf find करो, which is 90%, 90 आएगा ना. So 90 आ गया तो इसमें कितना होगा? Outside will be 10. So 10% will be there. Yeah. तो मेरा चलो. Always that use for Vf into rho f is equal to Vs into rho s. Floating में करो. Without copying करो. The relative density is asking. The body floats in water with 40% of the volume outside water. When the same body floats in 60% of volume remains outside in oil. The relative density. Relative density means with respect to water only. Density of oil by density of water is asking indirectly. So पहले पानी में डाला, बाद में oil में डाला. Two equations will fit. Solve and get the answer. First equation क्या है? A body floats, मतलब limited flotation है, with 40% of the volume outside water. ये 40% है, मतलब this is 60% because total volume of the solid we take as 100. Okay, when the same body floating on oil में 60% outside है, so 40% is inside. So is it 1.5? Like 1500 I got density of oil. Okay, देखेंगे local ना. So use the equation. हाँ मना करो. First equation लगो. Vf into rho f is equal to Vs into rho s. First equation बनाओ. And from oil का second equation बनाओ and solve. Divide करो आ जाएगा. ये oil है, ये वाला water. So relative density of oil will be density of oil by density of water only, 0.6. Yes, yeah. So it'll be 60 by 40. It's 60, yeah, 60 by 40. Yes. That's How much that is? 1.5 only. Yes, 1.5. आ रहा है? Yeah, करो. Sir, I'm getting 4000 by 6. उल्टा आएगा. 6 by 4 आएगा. कैलकुलेशन मिस्टेक क्या होगा? हाँ, ये करो. ये भी सेम है. A sphere is floating in water. It's 1/3 of the outside water. मतलब ऊपर 1/3 है तो नीचे कितना होगा? 1/3 means 2/3. 2/3. हाँ, 2/3. करो. 2/3 of the volume. Total volume of the solid is V. Solid is V ले लो. So first केस में क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट है, it is 1/3 of V ऊपर है तो नीचे 2/3 of V. So now second case में when the sphere is floating on the unknown liquid, ये unknown liquid है.
So it'll be 2/3 divided by 1/4. हाँ से बोलो पहले So कितना 8 by फ्रैक्शन में 3. बोलो हाँ 8/3. या 8/3 So can't we just directly just या tell math? डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन इशू नाउ अभी तक कौन सा वी आर एडिंग सॉलिड इन वन लिक्विड राइट अगर मैं दो लिक्विड्स में अगर मैं सॉलिड Sir, ऐड I'm करूंगा getting as 3/8. हाँ I'm getting it as 3/8. 3/8 हाँ Yeah. व्हाट इज Oh, फर्स्ट इक्वेशन three. Sir, 2/3 V into rho L is equal to 1/4 V into 1. ओके हाँ Yeah, so similar. इसमें नो नो 1/4 क्यों आएगा v इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड आएगा ना 1/4 only because they said outside the हाँ Because liquid. three सेकंड is में outside. 1/4 आएगा Yeah. सी So we फर्स्ट get इक्वेशन 1/4 टॉकिंग अबाउट to 2/3, हाँ which is equal to 3/8. 8/3 आएगा Sir, I'm getting 8,000 by 3. नो व्हाई बिकॉज इज अ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शंस में है दैट्स व्हाई वी शुड टेक 1 नॉट 1000 ऑप्शंस में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज देयर देखो vf into rho f is equal to vs into rho s okay tell me vf कितना है volume of solid immersed in the liquid is 2/3. 2/3 v and इसका density of the fluid is water only right देखेंगे लास्ट में because he is asking relative density of the liquid right देखेंगे is equal to इसका vs is volume of solid is v only density of the solid is how much density of the solid is given as rho s लगाएंगे first equation तो सेकंड इक्वेशन बनाओ समझ में आया Vs इज व्हाट वॉल्यूम सॉलिड कितना लिया V लिया ना V डालने का इनटू रो s ओके Yeah. और इसमें क्या है सेकंड में द स्फीयर में So ऊपर में 1/4 into हाँ rho W is equal to V into rho S. हाँ नो सॉल्व करो So that's what it says. So you get rho is equal to 1/4 by 2/3. 2/3 V इंटू रो W इज इक्वल टू इसका V/4 इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड राइट Yeah. तो मेरे इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं डेंसिटी ऑफ लिक्विड राइट अननोन लिक्विड राइट Yeah. हाँ नो सॉल्व करो कितना है आपको एनीबॉडी गॉट 8/3 मानो आया आपको 8/3 हाँ नाउ डिवाइड करो इसका डिवाइड करो कितना आएगा वी कैंसिल करो इसमें वी कैंसिल एंड आई वांट द लिक्विड डेंसिटी इज हाउ मच द लिक्विड का डेंसिटी रो एल इज आस्किंग ऋषा कितना है Sir, 8 by 3 only. हाँ 8/3 ओनली आएगा नो डिवाइड करो इस टू इक्वेशंस में Yeah, sir. 1/4 divided by 2/3 is 3/8. V/4 into It's रो 2/3 divided by 1/4. मानो समझ में आया किधर मिस्टेक किया बोल के Sir, he divided reverse. He did हाँ 1/4 divided by 2/3 instead of 2/3 ओके ओके divided by 1. हाँ वो मिस्टेक निकाल दो नेक्स्ट ये करो नाउ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इन द 3 पॉइंट्स 3 लिक्विड्स में देन क्या करेगा हाउ टू फाइंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम द डेप्थ ऑफ द ब्लॉक इनसाइड द मर्क्यूरीज ये कितना डेप्थ में है इनसाइड द मर्क्यूरी ओके ऐसे जेई में क्वेश्चंस में पूछ रहे हैं ऐसा वाला क्वेश्चंस में ऐसा वाला में आपको क्या करेंगे सी व्हाट इज द फॉर्मूला यूट यूज फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड टेल ए टैंक कंटेन्स वाटर ऑन द टॉप वाटर है ऊपर एंड मर्क्यूरी एज शोन टॉप ऑफ मर्क्यूरी वाटर मर्क्यूरी के ऊपर है ओके एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर पूरा 10 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है क्यूब है is in equilibrium inside the tank मतलब it is in flotation law of flotation में the depth of the block inside the mercury I want mercury में कितना depth है if I take this is x this will be how much total is 10 right 10 minus x right इसके ऊपर what are the force acting on it tell me what are the force acting on it इसके ऊपर दोनों लिक्विड है ना दोनों की वजह से अपथ्रस्ट आएगा अपथ्रस्ट ड्यू टू वाटर प्लस
upthrust due to mercury, and downwards is mg, right? So now since equilibrium, upward force downward force इक्वल करके सॉल्व करके आपको एक जनरल फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला वी विल राइट, दैट विल बी इजी फॉर यू. ओके, ऑन द वीडियोस मानो. सो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा whenever the three types of liquids are there. See normally क्या मेथड क्या है आपको, UW plus UHG is equal to mg, ये यूज करके सॉल्व करके डेंसिटी वॉल्यूम में लगा के सॉल्व करना पड़ेगा. वो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग यू यूज द फॉर्मूला दिस वन, ρ1 V1 plus ρ2 V2 is equal to ρs Vs. 1 to our mercury and waters का s solid का ρs into Vs is nothing but solid का. Okay, and for cylindrical का, for cylindrical or cubical body, So they said RD of the material of the block is 8.56. Doesn't that directly mean that density is 8.56? density of the material with respect to water gram पे दिया ना, yes, density of the material is 8.56. Okay, for cylinder में क्या यूज करेंगे, हाइट में यूज करेंगे ρ1 h1 plus ρ2 h2 is equal to ρs into hs. For cylindrical or cubical body में we have to use this one, हाइट टर्म्स में we have to use. ये दोनों डायरेक्ट यूज करो, आ जाएगा, करो ना. देखो हाइट इज गिवन, क्यूबिकल बॉडी है ना, हाइट इज गिवन, वो यूज करो. ρ1 यू कैन टेक एज वाटर और मर्क्यूरी यू कैन टेक, एक ही उसका हाइट लगाने का, वो वाला कौन सा हाइट में, दैट वन ओनली यू शुड टेक. So tell me first one, here the density of the mercury is how much in terms of centimeter gram per, they given as 13.6 बोल के. So 13.6 into h1, h1 is कितना डेप्थ में है, कितना डेप्थ में है वो ऑब्जेक्ट x, प्लस ρ2 h2, ρ2 कितना होगा, पानी का कितना है इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 into h2, h2 इज द कितना हाइट में पानी में 10 minus x is equal to ρs into hs. ρs is how much, density of the solid is nothing but the 8.56 into hs. So height of the solid is 10, right? Now use score and find the value of x. Oh, sir, you want the answer directly in meters. Centimeters I want. So then Answer what do right. you have to convert it? No need of converting because options में check करना पड़ेगा. And all are centimeters, right? No need of converting. एक भी किधर भी यूज कर रहे तो then convert करना पड़ेगा. Sir, 6. 6, yes, 6 centimeters आंसर. So आपको whenever ऐसा है तो Calculator. हाँ कैलकुलेट कितना पढ़ा आपको. Sir, 6. Yeah, sir, I got volume as 600. So Yes. yeah, 6. Okay, करो same model करो. A metallic sphere floats in an immersible mixture of water and liquid. Instead of mercury, liquid is given, such that 2/3 of the in water and 1/3 in the liquid. So में liquid same thing only. इधर बॉटम में ये लिक्विड है, रेड लिक्विड है, ऊपर तो ब्लू लिक्विड है. दिस इज ऊपर का और मिक्सबल मिक्सचर वाटर. सो इसका इज 2/3 एंड ये वाला 1/3. ये वाला इधर से तक 1/3. Now use the formula and find the density of the metal. मतलब solid का ρs चाहिए. So use the formula ρ1 v1 plus ρ2 v2. Spherical का volume terms में आएगा ना. Sir, it will be 10 power 4 by 3. Yes, perfect. ρ1 v1 plus ρ2 v2 plus is equal to ρ3 ρs vs.
answer. 1 second. Ten into 10 power 3 by 3. Yeah, 10,000 by 3. यस आया ये करेगा करो So या करो वो भी करने दो एक ही बार दूंगा मैं तो ये करेगा वो लोग yeah. आया Okay. हाँ ये करो So use acceleration is there now, right? Use करो ना. Air bubble of radius is much in water has an upward acceleration. No, a flotation नहीं है, acceleration है. General formula, general method I'm giving. The density of water is given. Water offers negligible Buoyant drag force force. minus mg will give you ma. Yes, correct. So इसके ऊपर क्या क्या forces acting on it bubble में? Air bubble is there. It is going upwards with the acceleration is here, and buoyancy force will be acting in the upward direction. So you get force is equals to Net m force bubble equal is to ma लगाओ. That's it. then for mass. Wait, 1 second. Net force equal to ma लगाओ. Equation second. So what should take the second. volume of the bubble as? Is the bubble the sphere? A bubble of the sphere only. Then I can Volume take is 4 4 by 3 pi pi r r cube, right? 4 by 3 pi r cube. Net force equal to ma लगाओ Krishna. Net force will be, tell me, buoyancy force minus mg, yeah? Mg minus buoyancy force. So buoyant force minus mg. minus mg. So net force is equal to ma. So Use what is acceleration? The question 9.8. Okay. So if I use 980 they given because आपको yeah 1 second, if I use calculator, use calculator if you want. you get 4 pi by 3 into 980 by 980 plus 9.8. If I use 1 second, 4 1 second. Simply m So find you get approximate as 4 grams. options they given as 4.15 4.51 4.15. मरे इसलिए दिया 1515. पक्का Yeah, 2020 में पूछा yeah, pakka 100%. yes पक्का done 4.15 is answer. So the actual answer is 4.147. So in that may we'll do PYQs questions on that Saturday class. Statics done. Statics the completely done. Okay. In the PYQs में questions करने वाले Saturday में. Okay, And sir. next week में we'll start with